अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6B के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइस ऑफ अ सोफ़ा इज़ $X। ठीक है, सो जो प्राइस है सोफ़ा की वो $X है, हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट है, अ मैन बाइज द सोफ़ा ऑन हायर परचेज विद दीज टर्म्स, अ डाउन पेमेंट ऑफ 25%। डाउन पेमेंट वो वाली पेमेंट जो हमने स्टार्ट में पे करनी होती है वो एक्चुअली हम एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल प्राइस पे करते हैं। ओरिजिनल प्राइस इज़ $X, सो डाउन पेमेंट 25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस है, सो 25% ऑफ X। एंड यू नो दैट हाउ टू सॉल्व इट, 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई विद X, सो आंसर विल बी $0.25 नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ X, तो डाउन पेमेंट को ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट, द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ओवर 30 मंथ्स। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ आवर प्रिंसिपल। सो रिमेनिंग अमाउंट क्या होती है, ओरिजिनल प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। ओरिजिनल प्राइस $X थी, माइनस डाउन पेमेंट करेंगे। नाउ एक्स का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, सो 1 माइनस 0.25 0.75x। दिस इज़ द रिमेनिंग अमाउंट और प्रिंसिपल। टाइम इज़ गिवन टू अस एज 30 मंथ्स, सो हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 करेंगे। 30 डिवाइड बाई 12, सो 2.5 ईयर्स। और रेट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 12%, सो आर की वैल्यू क्या है, 12 है। नो हम इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। आई इज इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे और इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 0.225x। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन दैट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट इज़ $52। हमें मंथली इंस्टॉलमेंट गिवन है $52। तो हम ये देखते हैं कि अमाउंट टोटल कितनी वो पे करेगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दिस इज़ द फार्मूला फॉर अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू हमने लिखी हुई है 0.75x वो, प्लस जो इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया 0.225x, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 0.975x। दिस इज़ द अमाउंट जो कि वो पे करेगा इन 30 मंथ्स। ठीक है, वो 30 मंथ्स में इतनी अमाउंट पे कर रहा है, तो 1 मंथ में कितनी पे करेगा, इस अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे 30 के साथ। सो मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। मंथली इंस्टॉलमेंट इज़ एक्चुअली द अमाउंट दैट ही इज़ पेइंग इन 1 मंथ। सो हम 1 मंथ के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट लिख लेते हैं और जो 30 मंथ्स की अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे 30 के साथ ताकि मंथली आ जाए। सो डिवाइड बाई 30 कर दिया। नो मंथली इंस्टॉलमेंट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन भी है, दैट इज़ $52। सो मंथली इंस्टॉलमेंट की जगह हम $52 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू, इनको डिवाइड कर लिया 0.025x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 52 को डिवाइड करेंगे 0.0325 के साथ। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1600। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Next, question number 12, Leighton deposits 20,000 in a bank. Now this is the amount that he is depositing in a bank, so this is our principal that pays a simple interest rate of 2.75% per annum. Now the rate is 2.75, so the value of R is 2.75 per annum in 1 year, so the value of T is 1 year. So using these values we are finding the interest for the first year. Principal 20,000, the value of R is 2.75 and we are taking time as 1 year. So this is the I1 represents the interest for the first year. Putting all the values, we will get the value of I1 as $550. Now read the next statement. If the interest rate decreases to X% per annum. Now we don't know कि कितना decrease हुआ interest rate, but it's given to us that कि X% decrease हुआ है. She will receive 50% less every year. अब जो अमाउंट वो रिसीव कर रही है, उसने इतने लीटिंग ने इतना डिपॉजिट कर दिया 20,000 बैंक में। अब हर साल उसे जो अमाउंट मिल रही है, अब ये वाले जो 20,000 है ये उसके बैंक में सेव होंगे। ठीक है, अब जो उसे हर ईयर मिल रही है अमाउंट, वो क्या एक्चुअली इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो उसे मिल रहा है। ठीक है, अब हर साल नेक्स्ट ईयर उसे कितना कम मिलेगा, $50 कम मिलेगा। अभी फर्स्ट ईयर में उसे कितनी अमाउंट मिली है, $550। तो नेक्स्ट में अगर $50 कम मिलेगा तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 500 मिलेगा। सो हमने I2 लिख लिया। I2 इज़ एक्चुअली द इंटरेस्ट दैट इज़ गिवन टू हिम इन द सेकेंड ईयर. So in the second year he will receive $50 less than the previous years. So I am subtracting $50 from 550. So in the second year he will receive $500.
Now the rate is not the same in the second year. Principal, the value of principal is same, and we are taking time as 1 year. That is already in the second year we are, the time period is 1 year. We will take the value of t as 1, but rate is x, okay, and we have to find the value of that x. So using the formula I2 is equals to PRT divided by 100. प्रिंसिपल भी सेम है, रेट की वैल्यू x है और t भी हमने 1 ले लिया डिवाइडेड बाय 100, और I2 हमने अभी फाइंड किया था 500, वो पुट करेंगे 500 और यहाँ से इजीली हम क्या करेंगे x को सेपरेट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो x क्या आ जाएगा 2.5. सो सी रेट डिक्रीज़ हुआ है, फर्स्ट ईयर में 2.75 था और अभी सेकेंड ईयर में 2.5 लेस हो गया. Now next question, the following information is advertised by a bank, 2.35% simple interest. Charlie found the interest rate attractive and decided to deposit 400,000 PKR. So this 400,000 is actually our principal, and 1 year later she only received an interest of 940. Interest is given. Upon reading the above advertisement carefully, she realized that she had been misled by it. In the part 1, how much interest had Shirley expected to receive after 1 year? She has received 940 PKRs, and we have to find that how much she was expecting. So question number 11, part 1. I, interest is equals, simple interest is equals to PRT divided by 100. Principal is given to us, rate 2.35. Using this rate 2.35 multiplied by 100, so answer is 9400 PKR. So Shirley was expecting 9400, but she received only 940 Pakistani rupees. Now in the part 2, explain how Shirley had been misled by the advertisement. अब हम ये देखेंगे कि वो उसको क्या कन्फ्यूजन हुई है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इन रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, सो हम यूज़ करेंगे फार्मूला अगेन सिंपल इंटरेस्ट का, आई इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100. बिकॉज अभी हमने जो रेट यूज़ किया वो 2.35 उसकी वैल्यू यूज़ किया. तो हम अभी क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल जो रेट था जो बैंक ऑफ़र कर रहा था अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस जो उसने रिसीव किया 940 इंटरेस्ट रिसीव किया, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक कितना रेट जो है वो ऑफ़र कर रहा था इंटरेस्ट रेट. सो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, आई इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100. सो इंटरेस्ट जो उसने रिसीव किया 940 वो वैल्यू यूज़ की, प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई विद टी डिवाइडेड बाई 100, और आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दैट इज़ 0.235. तो एक्चुअल वैल्यू जो रेट की आई है जो कि बैंक ऑफर कर रहा है वो 0.235 है, नॉट 2.35. सो मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, रेट फॉर 1 year इज़ 0.235 एंड रेट फॉर 10 years वुड बी 2.35. So read the advertisement carefully. It's mentioned 10 years high yield account. This is the rate for 10 years, not for 1 year. तो चार्ली ने क्या किया है, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दैट कि दिस रेट इज़ फॉर 1 year, और बैंक ने भी एडवर्टाइजमेंट ऐसे दी हुई थी कि 2.35 बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है और ये छोटा सा 10 year लिखा हुआ है. दिस इज़ फॉर 10 years दिस रेट, नॉट फॉर 1 year. तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ. सो वी विल राइट generally consider rate for 10 years as annual rate. Annual rate is actually rate for 1 year. This 2.35 was the rate for 10 years, and she considered it as annual rate. Next question number 12. Raju deposited PKR 15,000, so 15,000 is principal. 5.68 is the rate, and this is the rate per year, meaning that this is the rate for 1 year. And the total amount in the account after 6 years we have to calculate, and we have to calculate its value monthly. Now the time period is given to us as 6 years, so firstly we will convert this 6 years into months because we have to find the interest compounded monthly. So how to convert 6 years into months? By multiplying 6 with 12. So t is equals to 6 multiplied with 12, 72, and rate is given to us for 1 year, 5.68 for 1 year. And as we are calculating the compound interest monthly, so we will convert the rate for 1 month. Okay, it is given to us for 1 year, so we will convert it into
monthly rate, and how to convert the yearly rate into monthly rate by dividing the yearly rate by 12, because there are 12 months in a year. So 5.68 divided by 12, answer is 0.4733. Now for monthly interest, we will use these values that we have converted into months. That is, the value of t, we will use it as 72, and the value of or we will use it as 0.4733. Here it is compound interest, so t is actually r small n, and this capital R is also rate is small r. So using the formula, after putting all the values, and you can calculate its values directly by putting this on calculator. So amount will be 21,074. Okay, in the part 1 it was given to us that we have to find the compound interest monthly, and in part 2 we have to find the compound interest half yearly. Now we will convert 6 years into half years. So how many half years are there in 6 years? Obviously 12, because there are 2 half years in 1 year. So 6 multiplied with 2, answer will be 12. And this compound interest rate 5.68 is given to us for 1 year, and there are how many half years in 1 year? 2. So we will divide this 5.68 with 2 in order to get the interest rate half yearly. So I have done these calculations. Times 6 multiplied with 2, so 12. This is again small n, and this is small r. 5.68 divided by 2, 2.84. Putting all these values, calculate it on the calculator, and answer will be 20,991. Now the last question, Real invested 50,000 in an endowment fund for 5 years. Now principal is 50,000, and the value of small n is 5. The fund pays an interest compounded yearly, so we have to use a formula for the amount of compound interest. At the end of 5 years, she received a total of 58,000. Now amount is given to us, and we have to find the interest rate using the formula for amount of compound interest. A is equals to principal into 1 plus r divided by 100 whole power n. Amount was given to us 58,000. Principal, the value of principal was also given 50,000, plus 1 plus r. We have to find the value of r here, so divided by 100, and the value of n was 5. Okay, calculating all these values, we get 1.16 is equals to 1 plus r divided by 100 whole power 5. Now we have to separate this r in order to find its value. So ये जो पावर 5 आपको नज़र आ रही है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड पे पावर 1/5 ले लेंगे, बिकॉज जब हम इस साइड पे 5 की पावर 1/5 लेंगे तो 5 विल बी मल्टीप्लाई विद 1/5, सो 5 विल बी कैंसिल विद 5, तो पावर 1 रह जाएगी, और पावर 1 लिखें या ना लिखें मेक्स नो डिफरेंस. सो ये क्या रह जाएगा 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100, और इस साइड पे 1.16 की पावर 1/5 आ जाएगी. ये जो 1 था इधर जाके हम माइनस कर देंगे, और इस 100 को ही डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई कर लिया, और ये सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर पे ही पुट कर दें. पुट करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 3.01. मैं आपको कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देती हूँ कि ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्टली राइट 100 ब्रैकेट 1.16 and its power is 1/5, so this is the symbol for power, and in the power I have to take fraction, so this one is the button for taking fraction. 1 and by 5 minus 1 bracket close, so answer is 3.01. I am writing the answer only up to 2 decimal places, so hence 3.01 is the answer.